I think so. I should start now, and no one has responded about my audibility, whether I am audible or not. Charlie, Dixon. So I welcome you all to Scholar Studio Research Institute. My name is Shanze Kiran. I'm a parasitologist, a freelancer, and a researcher too. I'm very much delighted to be with all of you today. But as a researcher, I have seen how many students they struggle with starting their research paper, not because they don't have good ideas, but because they don't know how to introduce their introduction or to write their introduction about the topic they have selected effectively. So today we will master that today how to write a clear, focused, and a powerful introduction in our research work. Okay. Now, uh, yes. Before directly starting the introduction, let me give you an overview of the components which I have enlisted for you all to make the write-up process of your research work easy. ठीक है सबसे पहले first of all we will begin with the importance of introduction, that why introduction of your research write-up is important. Secondly, I have enlisted components of introduction so that the introduction portion of your research work जो है it becomes easy for you. You will know by the end of this lecture that what are the components of your introduction, what components or what essential parts should be included in your introduction portion. Then, with the help of examples, I will differentiate between a weak and a strong introduction. Okay. Then I will highlight some key points for writing an impactful and authentic, that is scientifically authentic introduction to your research work. Then I will inform or address you some common mistakes which you have to avoid during the introduction of your research work. Then I have prepared some question answers checklist, which you will compare it with your introduction, which you will write after this lecture for your research work. And then you will see whether you have met the criteria. If 8 to 10 questions are correct, you will compare it with the introduction. Then your introduction portion is very well and it is good to go for the review or the publishing. That's it. And if the criteria meets 5 questions to 7 questions, then you have to review your introduction portion. And if sadly your introduction portion जो है उसमें से 3 ही questions के answer कर सकता है, तो then you have to rewrite your introduction portion. ठीक है. So let's begin with understanding the importance of introduction. Why your introduction is so important? Acha ji, first of all, let me tell you that your introduction part of your thesis or a research paper is not only the beginning, but it's a foundation of your whole research work. If your foundation is strong, okay, and if your foundation is so impactful, and if your foundation is so scientific, then your whole research paper work is worth to be published, worth to read, and it will make a difference in the research work. So
इंट्रोडक्शन जो है इट सेट्स अ टोन एंड डायरेक्शन ऑफ योर एंटायर research work. It builds context means it develops a story around your topic, relevant, scientifically correct story. Okay? Then it will show why your research is so important and relevant. Now, a powerful or an impactful introduction जो होता है, it captures the attention of your reader, especially the supervisors and your reviewers. Now, with the help of example, जब हम किसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं वो हमें बड़ी अच्छी से समझ आ जाती है. सो आई वांट यू टू टेक द इंट्रोडक्शन एज अ funnel. Funnel, I hope so you all of you have seen in the lab. It is broad at the top, and when it we get down, it gets narrow. Same is the case with the introduction. It starts broadly in a manner that you have to take your research in a broader way. Broader way means you have to cover that scenario globally. When you address something globally, then it shows that your keen interest and your scientific approach. Then when we get narrow to the funnel, that is the fifth stage, so we get more specifically. So you have to begin your introduction portion broadly, and then stepwise you have to become more focused, more single line approach. So we have to divide the whole introduction portion into 5 stages in a funnel. One, two, three, four, five. And let me explain this with the help of an example, which will make it more easy and convenient for you. For example, okay, suppose you are writing a research paper on antibiotic resistance in urinary tract infection. For that purpose, first of all, you have to set the tone and direction. How? By focusing that antibiotic resistance is becoming a global health threat. You have to address this particular issue globally. Then, to build context, you have to briefly explain that UTIs are among the most common bacterial infections, especially in women. Now, what I have done in this is I have specifically mentioned one group of people, that is a woman, who are more infected with the UTIs, and we have to tell what's the antibiotic resistance in that. Now, how we to show the relevance, we have to check that the prescribed antibiotics they are becoming less effective, leading to longer illness duration and higher health care costs. Relevance shows that जो already given antibiotics हैं to that particular group of people, they are becoming less effective. ठीक है, we have to mention here that already existing treatments, they are becoming less effective. That's why we are doing this research work. यहाँ पे हमने रेलेवेंस को या रिलायबिलिटी को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू मेंशन द शॉर्टकमिंग्स या लिटरेचर गैप्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज. वो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर बिकमिंग irresistible या ineffective to the UTIs. So we have to give some other approach or other treatment to deal with the UTIs in women population. Now, next, what we have to do is to capture the attention. We have to do a literature review. We have to
do powerful incitements, we have to add powerful statistics. For example, in this case, I have mentioned that over 30% of UTIs जो हैं, they are becoming pathogens in South Asia are becoming resistant to first line antibiotics. Meaning that जो already antibiotics we give to the people in South Asia, they are already becoming resistant. ठीक है. To capture the attention, we have to mention the real statistics and powerful statistics, impactful statistics. अब यहाँ पे अगर मैं mention करूँ, over 10%, 5% of UTI pathogens in Southeast Asia are resistant to first line antibiotics, then it won't make a sense. The percentage should be impactful so that people should rely or should take a research work as a worthful thing. So इससे ये होगा, this kind of introduction would engage the reader and make them want to understand what your research is going to explore or solve. अगर हम अपने research के introduction को in this manner, we take this in this manner, then it will engage the more audience, more reviewers, and our supervisor will be definitely happy when we will take a research introduction in a stepwise process. सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हमने कहानी ऐसी स्टार्ट करनी है, उसका स्टार्ट ऐसा इम्पैक्टफुल बनाना है कि पढ़ने वाले को शौक हो कि भाई नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, अच्छा नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, इस बंदे के पास नेक्स्ट आइडिया क्या है. एंड फॉर दैट पर्पस we have to really use a scientific language in a research paper. Normal language नहीं use करनी. Sometimes आपको मैं बताऊं कि research papers की rejection की वजह ही ये use of formal language हो जाती है. ठीक है. That one non scientific language हो जाती है. अक्सर comments आ जाते हैं कि भाई improve your language. तो लैंग्वेज पे बड़ा जोर देना है. वी हैव टू यूज स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमने परसेंटेजेस यूज करनी है. रीसेंट रिसर्च वर्क से काम लेना है. ये नहीं करना कि 1990s के रिसर्च शुदा चीजें जो हैं उसको इंट्रो में डालना शुरू कर दें. नो, जितनी हम नई बात को हम रिसर्च में शामिल करेंगे उतना ही हमारा रिसर्च का काम जो है इट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल. ठीक है. Acha. Now, let me introduce let me give you some components of the introduction. ऐसे components मैं आपको बताऊंगी जो आपके research के introduction में शामिल होने ही होने हैं. For that purpose, जो मैंने आपको पिछला funnel दिखाया उसी को proceed करते हैं. Introduction में basically we have to use a funnel approach. Let's see how. See, this is the funnel. It's broader at its top and then it narrows at its end. So we divide this whole funnel into 5 stages. And these 5 stages become the 5 major and crucial and important components of your introduction. सही हो गया? Now, what is the first stage? We start our introduction with a broad statement to set the context. Broad statement से मुराद ये है कि whether you have taken a disease, whether you are working on any resistance of any antibiotic, whether you are working on any vaccination process, whether you are working on any cancer disease, any diabetes, and anything, you have to see its prevalence ग्लोबली, कि ग्लोबली भाई इस बीमारी का, इस मेडिसिन का, इस वैक्सीन का या जो भी इनोवेशन आप करना चाह रहे हैं उसका क्या लेवल है, ग्लोबली उस पर कितना काम हो चुका है. यू हैव टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद दिस कि ग्लोबली दिस डिजीज हैज दिस प्रेवलेंस, globally this medicine has this impact on that disease, particular disease. Now moving on to the second stage. ठीक है. फर्स्ट स्टेज को मैं आपको मजीद क्लैरिफाई कर देती हूँ.
प्रोवाइड्स अ ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम ना तीन चार क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आंसर करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट द डिजीज, about that particular medicine, about that particular vaccine, ठीक है, or about that particular species, ठीक है। if you are a parasitologist like me, तो आपको पर्टिकुलर पैरासाइट की बारे में जानना जरूरी है कि what we already know about it. Then why is this topic important? You have to answer this question. Then we use reliable statistics और trends। वही बात, ग्लोबली हम उसके ट्रेंड्स को चेक करेंगे कि भाई ग्लोबली हमारे जो हमने आइडिया पेश किया है उस पे कितना काम हो चुका है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट। स्टेट व्हाट इज नोन इंक्लूड्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट स्टडीज। अच्छा जी, इसमें हम लोग करते हैं व्हाट स्पेसिफिक इशू एग्जिस्ट, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, वर्ड स्टडी। आया जो हमने प्रॉब्लम पेश किया है, इज इट वर्थ स्टडीइंग और नॉट। यू हैव टू सी व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी पब्लिश्ड, ठीक है। यू हैव टू review the literature and you have to mention the recent research in your research paper with insight साइटेशन, ठीक है। इनसाइड साइटेशन का मतलब ये है कोई भी स्टेटमेंट आपने अपने रिसर्च वर्क में विदाउट रेफरेंस इंक्लूड नहीं करनी, और द रेफरेंस शुड बी अप टू डेट। अप टू डेट मतलब पिछले 3 सालों में उस चीज पे क्या रिसर्च हुई, पिछले 5 सालों में उस पे क्या रिसर्च हुई। यू हैव टू मेंशन द डेट, यू हैव टू मेंशन द ऑथर, दैट्स व्हाट वी कॉल साइटेशन, ठीक है। moving on to the third stage, now we have to identify the problem, literature gaps and limitations from previous studies। का मतलब ये है कि we have to answer what hasn't been studied or resolved yet। बहुत होता है, बल्कि हर पेपर में ये होता है, रिसर्च पेपर में, कि देयर इज अ लिटरेचर गैप। कोई ऐसा लूप होल जरूर होता है जिसको वी हैव टू आंसर। अगर वो लूप होल ही ना हो तो हाउ कैन वन रिसर्च। रिसर्च मीन्स दोबारा सर्च करें उस चीज को, ठीक है। तो वी हैव टू मेंशन दैट कि पिछले काम में ऐसी कौन सी चीज रह गई थी जो वी हैव टू मेंशन इन आवर स्टडी, दैट विल मेक आवर रिसर्च more strong, and we have to mention that thing in our introduction at this stage, and it will make our introduction more strong। Now moving to the next stage, that is state how your study aim to address the problem। इसमें what we do is why does this study matter now, what practical or academic purpose does it serve। इस चीज में हम लोग ये एड्रेस करते हैं कि भाई व्हाई आर स्टडी इज सो इम्पोर्टेंट। हमने अपने रिसर्च वर्क को प्रूव भी तो करना है भाई। व्हाई दिस रिसर्च वर्क इज सो इम्पोर्टेंट, सो वर्दी के रीडर्स आपके रिसर्च वर्क को देखें, उसमें से चीजें लें, देन दे अप्लाई ऑन देयर रिसर्च थिंग्स ना। So we have to state these things at this stage। Now at the fifth stage, that is the most narrowest part, state your purpose of your research work, that is in form of hypothesis or a research question। At the end of your introduction, you have to state the hypothesis, whether this medicine will help to improve that particular disease, or whether this vaccine is reliable or not। You have to either test your hypothesis or you have to mention a clear cut statement about your research कि भाई my research is about this, so I have conducted this research। और ये चीज जो फिफ्थ स्टेज है, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ रिसर्च कि आप रिसर्च किस टाइप की कर रहे हैं। नाउ ये तो हो गया। Now I will give you a differentiation between a weak and a strong introduction।
with the help of an example. But before that, the components which I have already explained with the help of that funnel approach, I have enlisted them. ये 5 components हैं जो आपके इंट्रोडक्शन में मस्ट होते हैं, मस्ट होने. First of all, the background information about that ailment, that medication, that vaccination, or a species, if you are a parasitologist. Okay. Then we have to state the problem in a particular group of people, like I mentioned earlier in the women. Okay. Then proceeding that with the literature gap, then you have to review the literature and you have to include the literature with citation, recent citation. ठीक है, and you have to mention the gap कि फलाने रिसर्च में ये बात कही है लेकिन उसमें ये गैप मौजूद है. सो अ रिसर्च वर्क विल हेल्प टू empower that gap, or a research will fill that gap, and this thing comes under the justification or rationale. And we have to end our introduction with our hypothesis or the objectives or the goals we have set for a research work कि भाई हमारे ये goals हैं, ये objectives हैं, we have to achieve this through our research work. You have to enlist them in 1 to 2 sentences. Now proceeding to the weak and strong introduction differentiation. फॉर एग्जाम्पल, वीक इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पल मैं इस तरह देती हूँ. एक बंदा है, वो अपने इंट्रोडक्शन में लिखता है कि भाई कैंसर इज अ डेडली डिजीज अफेक्टिंग मिलियंस. मैनी स्टडीज हैव बीन डन ऑन कैंसर. दिस स्टडी इज ऑल अबाउट लंग कैंसर. ये एक बंदे ने इंट्रोडक्शन जी इन 3-4 अल्फाज में लिख के एहसान कर लिया. ठीक है. तो इट्स अ वेरी वीक इंट्रोडक्शन. ना उसमें कहानी है, ना उसमें बैकग्राउंड है, ना उसमें टोन है, ना उसमें कॉन्टेक्स्ट है, ना उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ना उसमें जी उसका हाइपोथेसिस क्लियर है. तो इट्स अ वेरी वेरी वीक इंट्रोडक्शन. नाउ मूविंग टू द स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, आप लोगों ने क्या करना है? स्टार्टिंग विद द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. Lung cancer remains one of the leading cause of cancer-related mortality globally. अच्छा, ग्लोबली हमने इसका स्टेटस चेक किया और ये लाइन लिख ली. ठीक है. अगले बंदे को पता चले कि भाई वी हैव डन द लिटरेचर रिव्यू, वी हैव स्टडीड सो मेनी रिसर्च पेपर्स अबाउट द रिसर्च वर्क. Then we have checked its status globally. Then we have come to conclusion that it remains one of the leading cause of cancer and death globally. Despite advances in treatment, early detection remains a challenge. Remains a challenge का मतलब ये हुआ कि भाई इस बंदे ने मेंशन कर दिया है कि डिस्पाइट एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं, कीमोज भी आ गए और भी बहुत से बायोमेडिकल ये नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अर्ली डिटेक्शन पे किसी ने अभी तक गौर नहीं किया. तो ही मेंशन द लूप होल, द लिटरेचर गैप. This study aims to evaluate a new biomarker for early diagnosis in high risk population. अब इस बंदे ने जी मेंशन कर लिया कि दिस इज माय एम of for my research work. That is we have to take a new biomarker for the early diagnosis. We have to evaluate that. So to check its diagnosis in a high risk population. So this is the more engaging, more focused, more broadly explained and well written strong introduction example. So moving to the must have of an introduction कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या चीज जरूरी है. I'm sorry, क्या चीज होनी जरूरी है. So you should start broadly and end specifically using the funnel approach. You have to stay focused, be concise, cite sources. Reliable sources को
फॉलो अप कीजिए, रीसेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए, रीसेंट रिसर्च वर्क को देखिए, न्यू इनोवेशंस को देखिए कि भाई हर तरीके से देखें कि आइदर उस डिजीज से पहले क्या काम हो चुका है। 1990s में नहीं चले जाना, अर्ली 2000s में नहीं चले जाना, रिसेंट वर्क 2020, 25, 24, 23, इसमें आपने अपना रिसर्च चेक करना है। और यू हैव टू एंड योर introduction with a clear message कि भाई our research purpose is this. Now, the common mistakes which we all make, you have to avoid during the introduction is too much background. बैकग्राउंड इतना भी नहीं डालना कि वो प्रोसेसेस मेडिकल, क्या कहते हैं उसको, साइटोलॉजिकल प्रोसेसेस लिखने शुरू हो जाए, उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। एवरीवन नोज कि क्या प्रोसेस होगा, और जिसको नहीं भी पता तो वो अलग से प्रोसेस देख लेगा। टू मच बॉसी नहीं होना, इधर उधर की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट बट साइंटिफिकली करेक्ट। ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हम अपने रिजल्ट्स को इंक्लूड नहीं करते, अपने रिजल्ट्स को डिस्कस कभी भी नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन। कोई भी क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछते हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन इन अ फॉर्म दैट साइंटिफिक क्वेश्चन वी डोंट ऐड इन आवर इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, साइंटिफिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी। ये तमाम कुछ जानने के बावजूद एट द एंड जो है स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, आया मैडम और सर, सब कुछ समझाने के बाद उनका एक मासूमाना सवाल होता है, भाई हाउ लॉन्ग अ रिसर्च इंट्रोडक्शन शुड बी, हमारा रिसर्च इंट्रोडक्शन कितना लंबा होना, कितने पेजेस का होना, कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो भाई ठीक है, जब आपको इतने कंपोनेंट्स बता दिए, 5 कंपोनेंट्स मैंने दिए, वो आपने इंक्लूड कर दिए, लेकिन फिर भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट टू नो द लेंथ ऑफ देयर इंट्रोडक्शन, इसका भी हल है हमारे पास। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ योर रिसर्च वर्क, कि आपकी रिसर्च वर्क किस टाइप की है, दैट यू विल स्टडी। या तो आप लोगों ने स्टडी कर चुके होंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पॉपुलेशन स्टडी, ये वो। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सेकेंडली, हर जर्नल या हर इंस्टीट्यूशन का जो होता है वो वर्ड लिमिट क्राइटेरिया ऑलरेडी मेंशन होता है। फॉर बिफोर राइटिंग योर रिसर्च वर्क यू हैव टू सिलेक्ट योर जर्नल। जर्नल्स आपको देखने पड़ते हैं, फिर उनका क्राइटेरिया देखना पड़ता है। तो उसके मुताबिक यू हैव टू मेक योर इंट्रोडक्शन एज मच लॉन्ग एज यू कैन, बट क्राइटेरिया सेट होता है। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ, शॉर्ट रिसर्च आर्टिकल लिखना हो तो इंट्रोडक्शन शुड कंप्राइज नियरली 300 to 500 वर्ड्स, जो कि 2 पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होगा। अगर थीसिस की बात करें तो 2 to 5 पेजेस, और वर्डिंग उसमें 800 to 1500 वर्ड्स। और अगर सिंपल केस रिपोर्ट्स डालनी आपको तो शॉर्ट पैराग्राफ 250 वर्ड्स वुड वर्क बेटर। ठीक हो गया। अच्छा, आई होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। And I wish all of you who are present here, they could be able to write the introduction to your research work. उसके लिए I have prepared a questionnaire. जब आप लोग इस काबिल होंगे, इंशाल्लाह हो भी जाएंगे, कि आप अपना इंट्रोडक्शन राइट अप करेंगे, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चनेयर सेट किया है। ठीक है। You, after writing your introduction, you have to answer all these क्वेश्चन फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन जो आप लिख चुके होंगे। अगर तो ये आंसर्स यस 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 में आए, 8 to 10, तो वेरी वेल डन, आप लोगों को पता चल गया कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे। फॉर दैट पर्पस मैं आपको बताऊं, यू टेक योर इंट्रोडक्शन इज लाइक अ डोरवे। उसको एक राहदारी की तरह रखें, समझें। ठीक है। मेक इट वाइड इनफ टू लेट द रीडर इन।
इतना ग्लोबली को हाईलाइट कर लें अपने काम को, रिसेंट रिसर्चेस इंक्लूड करें एट द स्टार्ट, कि भाई रीडर ना स्टक हो जाए कि भाई अच्छा ये भी हुआ है, ये भी मेंशन है, दिस इज आल्सो डिस्कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। लेकिन इतना लॉन्ग भी ना करें कि टाइड इतनी लंबी कहानी भी ना ले जाए कि पढ़ने वाला जी थक ही जाए कि भाई एंड कहाँ हो रहा है। तो जब आप लोग इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने प्रिपेयर किए हैं। ये आपने अपने इंट्रोडक्शन के साथ मैच करने हैं। अगर तो ठीक है, देन वेरी वेल, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इंट्रोडक्शन। क्वेश्चंस मैं पढ़ लेती हूँ। इज द बैकग्राउंड ब्रीफ एंड रेलेवेंट? बैकग्राउंड को हमेशा नेसेसरी रखना है, बहुत ज्यादा बहुत सी चीजें नहीं डालनी उसमें, प्रोसेसेस नहीं डालने, टाइप्स फॉर एग्जांपल टाइप्स नहीं डाल देनी सेल्स की, वो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। फॉर दैट पर्पस आपको मैंने एक फनल अप्रोच दे दी है, उसको आपने फॉलो करना है। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो 1 to 2 लाइंस में क्लियरली लिखना है। और जो लिटरेचर आप डालेंगे अपने काम में वो हमेशा साइट्स के साथ डालना है, साइटेशंस के साथ। साइटेशंस मतलब रेफरेंसेस के साथ कि किस पेपर से आपने वो रेफरेंस लिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट ही वहां से उठा के नहीं डालना। प्लेजरिज्म इतनी ज्यादा आ जाती है, दैट इज नॉट बेयरेबल। आप आइडिया जरूर लें लेकिन उसको साइंटिफिकली अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है, सो दैट इट कुडंट मैच विद दैट पर्टिकुलर रिसर्च ऑलरेडी मेंशन्ड। फिर ये कुछ और चीजें हैं जिसमें लैंग्वेज आ गई, ठीक, इंट्रोडक्शन के वर्ड्स आ गए, हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर। तो ये यू हैव टू मैच ऑल योर इंट्रोडक्शन विच यू विल राइट। तो फिर यू विल सी कि आपका कितने पानी में इंट्रोडक्शन। नाउ कंक्लूड कर देते हैं जी हम अपने इस आज के लेक्चर को। In summary, a compelling introduction established the groundwork for impactful research. Impactful research groundwork मैंने आपको पहले बताया है, your introduction जो होता है it's a foundation of your whole paper. अगर आपका introduction अच्छा है तो your paper will definitely publish. So work on your introduction first. आपका इंट्रोडक्शन मीनिंगफुल होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू के जो गैप्स हैं ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, प्रॉपरली हाईलाइट होने चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो योर इंट्रोडक्शन जो होती है ये आपका, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो मेक इट स्ट्रॉन्ग by following all the tips which I have mentioned in form of components. Write it wisely, make it scientifically correct. Try to mention the recent uh, advances in science. So at the end जो है रिसर्च पेपर इंट्रोडक्शन, ये जो एक छोटा सा स्लाइड है, छोटी सी स्लाइड है, आई हैव समराइज इट। और अगर आप ये भी पढ़ के अपना इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं तो इट इज वेरी गुड टू गो। I have divided the whole introduction into 5 stages. First of all, the problem statement in a broader context. कि globally हमने उसका देखना है कि whether that disease, medicine, vaccine, parasite जो है उसका globally prevalence क्या चल रहा है। प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, क्लियरली मेंशन करना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। लिटरेचर रिव्यू जो है we have to mention that already published data, already published, recently published statistics क्या चल रही हैं। फिर उसी लिटरेचर रिव्यू में हमें गैप मिल जाता है, लूप होल मिल जाता है, लिमिटेशंस मिल जाती हैं।
कोई स्टार्ट ऑफ द डिजीज पे किसी ने काम नहीं किया होता, कोई जो है वो एंड पे काम नहीं करता, कोई जो सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं उस पे काम नहीं कर रहे होते, कोई जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जैसे कि यंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कंसीविंग मदर्स, अच्छा डायबिटिक पेशेंट्स पे काम नहीं कर रहे होते, उनको हाईलाइट करना चाहिए. Then to make our problem significant, we have to describe it. Why this problem need to be solved, resolved. ये जो प्रॉब्लम हमने मेंशन की है अपने रिसर्च में, why it's worthy to be resolved, क्यों है इसको रिजॉल्व करना जरूरी. क्योंकि पॉपुलेशन पे वो ज्यादा बर्डन डाल रहा है इस वजह से, या फिर जो कंसीविंग मदर्स हैं दे आर ऑलरेडी टायर्ड, पॉपुलेशन उस पे काम कर रहे हैं. जो डायबिटीज जो कॉमनली हर बंदे को है, तो उसका प्रॉब्लम को क्यों रिजॉल्व करना क्यों जरूरी है. तो फिर आपने एट द एंड जो अपना इंट्रोडक्शन का एंड करना है वो किस पे करना है कि आपने क्लियरली बताना है अपना हाइपोथेसिस, क्लियरली बताना है अपना पर्पस ऑफ द स्टडी, कि आप क्यों कर रहे हैं. जो आपका पर्पस ऑफ द स्टडी होगा भी आपके मैप को, आपके रिसर्च वर्क को मैप आउट करेगा, क्लियरली डिफाइन कर देगा कि हाँ भाई इस पूरे रिसर्च पेपर में इस बारे में बात की जा रही है, इस पर्टिकुलर चीज को प्रूव किया जा रहा है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. होप के सबको समझ आई होगी. इफ एनीथिंग इज unclear you can ask me. Thank you so much, and I wish you all your best in your academics. And I hope so. Every one of you who is present here is able to write a powerful introduction to your research work. Thank you. Any questions from anybody? I'm here to answer. अच्छा जी. मैसेज आया है, हाउ कैन वी साइट लिटरेचर गैप, डू we have to give references for that to also do each sentence of intro required reference. Not each of the sentence required a reference. चलो मैं one by one आन. How can we cite literature gap? How can we cite? इसमें आप लोग पेपर रिसर्च पेपर सर्च करेंगे. ठीक है. You have to study their introduction. उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि our work is on this process, on this disease, but we haven't studied this. ये उसका लिटरेचर गैप हो जाएगा. ठीक है. लिटरेचर गैप हर रिसर्च पेपर में मेंशन होता है कि वी हैव वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर साइट बट वी हैवंट वर्क और वी हैवंट स्टडीड दिस. ठीक है. या फिर ये कह देते हैं दिस स्टडी इज लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरह मेंशन होता है. So that is our literature gap. We have to give references for that too. Yes, we have to. We must give references to our literature gap. उसके बगैर तो कोई बात नहीं है. लिटरेचर रिव्यू जो आप लिटरेचर यूज करेंगे अपने रिसर्च में, you have to give the references for that too. Also, do each sentence of intro require references? No. आपका hypothesis, आपका purpose जो होगा that don't require reference. आपका जो स्टार्टिंग ग्लोबली दिस स्टे ग्लोबली जो उसका सिनेरियो होगा, वेदर अ डिजीज अ मेडिसिन और अ वैक्सीन, तो उसमें आपने रेफरेंस नहीं डालना. ठीक है. नॉट एवरी पार्ट ऑफ योर intro, not every sentence of your intro require a reference. Only a literature gap या लिटरेचर रिव्यू जो हम उसमें शामिल करेंगे
जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो शामिल करेंगे, उसमें हम रेफरेंस डालेंगे। अच्छा जी, एक बात और, जो हम लाइन ले लेते हैं या पर्टिकुलर नॉलेज ले लेते हैं फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स, उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। वी हैव टू यूज आवर ओन साइंटिफिकली करेक्ट लैंग्वेज। हमने साइंटिफिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है उसके लिए, और उसके आगे रेफरेंस डाल देना है। ये नहीं करना वहां से कॉपी पेस्ट कर देनी है, वो प्लेजरिज्म में चीज आ जाएगी। जब हम प्लेजरिज्म एट टाइम चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये लाइन आपने फलाने पेपर से उठाई है। तो डोंट डू दिस ब्लेंडर। आई होप इट्स क्लियर। So you guys can tell me if I proceed this or should I end it here? Welcome, and I hope now you will be able to write at least the introduction of your uh, research write-up. I will share this presentation which I made it for you, so that in future जब आप अपने इंट्रोडक्शन लिखें, आपके पास एक मैप होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसको आप फॉलो अप करके अपना इंट्रोडक्शन एटलीस्ट सही लिख सकें। ठीक है जी। Okay, I'm ending here. I'm leaving, and this lecture is recorded and it will be given to you by the Scholar Studio team. And that's all from my side. Thank you so much for coming and for joining me, for listening me, and for hearing me. I hope I have solved your problem. Thank you so much.